Okay, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay. Okay, students, we are discussing about the operations on pointers. We can able to perform the operation of addition. Okay, one thing. Second thing, but the operation of the addition of two pointers like PTR1 plus PTR2, that is not possible. Afterwards, that we had discussed about the pointer with subtraction value with any integer value, that is possible. Similarly, if we want to subtract two pointers, that is also possible. If I want to subtract two pointers, that is also possible. Now, as in this, suppose there is a two pointers in pointer PTR2. In pointer PTR2, there is an address 306. I am just taking an example. There is a pointer PTR1 that is storing the value 3000. Okay. Now tell me what will be the answer. Now if I try to subtract PT, that is a 306 minus 3000. What will be the answer? According to you, what will be the answer? Tell me. 6, third position, second position. Ma'am, third. Now Third, ma'am. listen. Index 2, ma'am. Back 3, ma'am. 3. 3. This M always store the integer value, not the address. This M always store the integer value, not the address. If I try to subtract like this, it will provide us the one address. When I want to try some, हम subtract का तो हमारे accordingly address आता है, पर जब भी दो पॉइंटर को subtract करते हैं तो वो क्या provide करता है हमें integer value. It always provide us the integer value. Suppose one pointer is at this location and second is at this location. Now, if I want to इसको यहाँ से minus करना है तो क्या आंसर आएगा? 1, 2, 3. The answer will be 3. मीन्स कि 3 स्टेप्स वो बैकवर्ड आ गए. यहां से इस पॉइंटर से इस पॉइंटर तक मूव किया है तो कितने स्टेप मूव किया? 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप. ओके, सो द आंसर इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इज 3. क्लियर? Whenever we subtract two pointers, it will provide us the integer value. How many steps I have to move backward? How many steps I have to move backward? Like 1 step, 2 step, 3 step. So the answer will be the 3. Okay. Now, this is about the subtraction part. This part is visible to all of you? Yes, ma'am. Now, Yes, you can see here, there is a one pointer PTR 1 and a pointer PTR on 2. There is a operator. This is operator is called, this operator is relational operator. Relational operator means relation. We can able to calculate the relation of the two pointers. We can able to calculate the relation of two pointers. We can also able to write the not equal to. We can also able to write the less than equal to, greater than. Okay, these things are possible because these all also provided true or false relation. इसमें सभी में आंसर हमारा true और false ही आता है. As you know, relational operator always provide the true or false answer. So this is possible. These statements are the valid statements. But if I try to add two pointers, this is an invalid statement. If I try to add two pointer PTR1 and the PTR2, then it will generate an error. It will generate an error. Similarly, if I try to multiply two pointers, that is also an invalid statement. If I try to divide any pointer with any integer value, that is also impossible. That is also invalid. If I try to divide two pointers, that is also invalid. ये invalid क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेटा अगर मैं दो पॉइंटर्स को डिवाइड करती हूँ, ठीक है, मेरा एड्रेस जो है वो एड्रेस पॉसिबिलिटी जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो आ जाए. That is why we can't able to use these statements while using the pointers, while performing the operation on pointers. I think it is clear to all of you.
कि how we can use the pointer operations on pointers, how we can implement the operations on pointers. Yes, ma'am. Any doubt or any question regarding this part? No, ma'am. No? No, ma'am. Okay. Now let's move to the, before that let's have one poll. I'm going to launch first poll. Hmm. Let's take one value, variable 10. I'm going to end the poll. Hurry up. Within 5 seconds, I'm going to end the poll. Okay, what will be the answer in this case? Ma'am, B. B. Is it clear to all of you? No, ma'am. Okay, let me execute this program then on the board. Int, there is the one variable I have to, there is one variable A and B, which contain the 10 value, and B contain the 100 value and the 200 value. Okay, then afterwards there is operation, that is the pointer is created P, which store the address of A. Okay, then afterwards there is another pointer Q which store the address of B. Easy लग रहा है ये तो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? P is equal to Q. What is the problem in this case? There is the one variable A which store the 100 value, that is exposed at 3000 location. There is another variable B which is at location, which store the 200, which may be as the 302 location. Okay, now there is two variables, two pointer variables, one P and one second Q. In P, you are trying to store the address of A. What is address of A? 3000. That is stored into here. Now Q store the address of P. B, there is the 3002 location. Now Q, address of Q is stored into the P. Address of Q store into the P, means this address is stored into the P. Now this clear? I think it is clear to all of you. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. the question, if P is 30T2, means now P also start pointing to the B. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now any doubt? No, ma'am. Easy?
Okay, I'm going. Chalo, let's start with the next topic first. Then afterwards, then we have another poll. Now that is very important topic. और ये टॉपिक जो है ना basically basic concept of dealing any pointer we will use the dynamic memory management. Dynamic memory management. Anyone can tell me about the dynamic memory management? What is dynamic memory management? मैम जब भी हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो जो मेमोरी होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। आपकी Yes. कोड सेक्शन होती है, स्टैक होती है और हीप होती है मैम। Yes. तो Yes. जब हम प्रोग्राम जो वेरिएबल लेते हैं वो स्टैक में जाके मतलब होती है, मतलब स्टोर होती है मैम। और जो कोड सेक्शन होती है उसमें जो अपनी मेन प्रोग्राम होती है वो कोड सेक्शन होता है। जब हीप मेमोरी की बात करते हैं मैम तो एक पॉइंटर लेते हैं, मतलब हम जब प्रोग्राम रनिंग टाइम में हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं एरे के साइज को, तो उसके लिए हम हीप मेमोरी का यूज करते हैं मैम। Yes, yes, you are right, Abhijit. Now you can see here, whenever we create any program, our program will be contain some memory. हम ये बात करते हैं ना, हमारा प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। तो हमारा मेमोरी में क्या होता है, जो कोड सेक्शन होता है, वैसे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे। आई कैन शो यू हियर बाय राइटिंग दिस CMD. Let me show you by moving to the command. I will write debug command. cd dot. I think hyphen dot a debug. I think that doesn't support in the विंडो 10. आप अगर आपकी विंडो 7 से मतलब XP है, जहाँ विंडो 7 है, तो आप यूज कर सकते हो debug command. It will show you about the whole memory locations which are available in our operating system. Okay. It will show all the memory locations which are available in your operating system. Now there is basically क्या होता है कि हमारा stack होता है, that is a stack. Stack always contain the addresses. Whenever you store the int A, it is always stored into this location, in this part. If you write the pointer PR, that is the reference variable, this reference variable is stored into this. Okay, means कि जो भी आप डाटा स्टोर कर रहे हो, मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, वो कहाँ पे कर रहा है, into the stack. Now that is a static memory. That is a static memory. ये static memory क्या है? Static memory represent that कि जब तक आपका प्रोग्राम फिनिश नहीं होता, जब तक ये पूरा कोड सेक्शन फिनिश नहीं होता, ये मेमोरी को लीव नहीं करते. It will not leave the memory. It will not leave the memory. Okay, depends upon the block. Block किस block में आप work कर रहे हो. Now heap. Heap is basically used to allocate the memory when it is required during the run time. There is the memory management of two types. One is a static memory management. Second is a dynamic memory management. There is a static memory management and the dynamic memory management. Static means whenever you want to store the data, static during the compile time. Like you are providing int A, that is during the compile time. When you provide a memory during the compile time, that is called the static. That is called the static binding or static memory provision. Static binding आते हैं, मतलब linking. And the second is a dynamic. Dynamic means the memory which is providing during the run time. The memory which is provided during the run time, and this memory is provided into the heap. This memory is provided into heap, not in the stack. Remember this thing. जब भी आप कोई int a लिखते हो तो वो मेमोरी कब प्रोवाइड होती है, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हो, तभी उसी टाइम पे मेमोरी प्रोवाइड हो जाती है. कहाँ पे? स्टैक के अंदर. मोस्टली केसेस में स्टैक के अंदर प्रोवाइड होती है. ओके, बट सपोज उससे क्या है, जब तक मेरा प्रोग्राम है तब तक वो मेमोरी मेरी यूटिलाइज रहेगी, चाहे मैं उस प्रोग्राम के सपोज void main लिखा मैंने, I have written the void main and int a, and here I write the cout a and I have taken the 10 value. Okay, int a 10, cout a. Okay, then afterwards this I had written the 100 lines. I had written the 100 lines.
और 100 लाइंस में कहीं भी मैंने ए यूज नहीं किया, पर जब तक मेरा ये प्रोग्राम रहेगा तो मेरा क्या रहेगा, माई मेमोरी विल बी ऑक्यूपाइड बाय, चाहे मुझे वो रिक्वायर्ड है चाहे नहीं है. So it is always prefer to use the concept of dynamic memory management. Means whenever the requirement of memory, allocate the memory, or whenever it doesn't required, remove, delete the memory. It depend upon program. इसमें क्या है, कंपाइलर डिपेंडेंट है, स्टैटिक है. When जब उसने देखा इंट ए, उसने स्टैक के अंदर मेमोरी प्रोवाइड कर दी. ओके, और कब तक रहेगी, जब तक आपका प्रोग्राम फिनिश नहीं होता, जब तक आप पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर लेते, चाहे वो आप यूज कर रहे हो चाहे नहीं यूज कर रहे हो. दैट इज अबाउट जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो अभी तक हमने पढ़ा स्टैटिक. डाटा इज स्टैटिक, द मेमोरी एलोकेशन इज स्टैटिक. now we are going to discuss about the dynamic memory allocation. Dynamic memory allocation means when I will run the program, then it only execute, provide the memory. तभी memory provide करे. Like if I write cout enter n, scene n, जो n को memory provide हो वो कब हो, during the compile time when it is required, and delete the memory when it is not required in the program. That is concept is the dynamic memory allocation. And data store in the case of dynamic memory allocation is always in the heap. Data which is stored in the case of dynamic memory allocation is into the heap. I think these terms are clear to all of you. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारे Yes, प्रोग्राम ma'am. जो भी मेमोरी होती है उसमें एक स्टैग होता है. Yes, स्टैग में ma'am. क्या होता है, स्टैटिक डाटा दैट इज इंट ए. एक होता है हीप. हीप इज यूज्ड फॉर द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ड्यूरिंग द रन टाइम विच मेमोरी इज प्रोवाइडेड, एंड वन इज अ डाटा सेगमेंट. डाटा आवर होल प्रोग्राम. ओके, क्लियर टू एवरीवन? अभी तक जो हमारा प्रोग्राम था वो कहाँ पे डाटा स्टोर कर रहा था, कहाँ पे डाटा स्टोर कर रहा था, Stack. stack के अंदर, into the stack. Okay, till now which we had discussed that data stored into our stack. Now we are going to store our data into the heap during the by the concept of dynamic memory management. By the concept of dynamic memory management. Okay, let's start with the dynamic memory management. In the C++, two operators are used for the dynamic allocation. For the memory allocation or for the memory deallocation, there are two operators. Whenever I want to allocate the memory, I will use the new operator. Whenever I want to allocate the memory, I will use the new operator. Okay. Whenever I want to deallocate the memory, I will use the delete operator. I will use the delete operator. Clear? Whenever I want to allocate the memory, I will use the new operator. Whenever I want to delete the memory, I will use the delete operator. Now, suppose what is the syntax of allocation of memory? What is the syntax of allocation of memory? Suppose I have taken the one pointer. Okay. This means ये pointer क्या है, हमारी कहाँ पे हो रही है allocation? That is into the stack. Till now, the memory is allocated into the stack. Okay. Now, if I write the term pointer equal to new, this is a new keyword. This is a keyword, and then the data type. Then a data type. Now, memory will be allocated into the heap. When? During the run time. When you run the code, then 2 bytes of memory will be allocated into the heap. Clear? Clear? Yes, Or ma'am. not? Yes, ma'am. Yes. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, suppose I want to deallocate this memory. I want to deallocate this memory, and always remember, whenever you write the new keyword, whenever you allocate the memory, then it is mandatory to delete that memory. It is mandatory to delete that memory. Means if you are using the new keyword in your program for allocation of memory, then it's
become mandatory for you to delete. It will not generate any error, but it will provide a garbage problems for the pointer. Delete keyword. Delete keyword. आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप new operator use कर रहे हो, whenever you are using the new operator that is allocating the memory, then it's become mandatory for you. I say that you have to use the delete operator. That you have to use the delete operator. That will be deallocate the memory. Okay. Now, before to start next program of the allocation, let's have one another poll. Okay. I'm going to launch the poll. I'm going to end the poll. Rejoin the meeting. If poll is not visible to any student, rejoin the meeting. Okay, I'm going to end the poll. What is the answer in this case? FG. A. The answer will be A. I think it is clear to all of you. Yes, Clear? A, ma'am. Yes, A. ma'am. Yes, ma'am. Yes, answer is A, FG. Answer is A, FG. Okay? Okay, students. Now I'm going to launch next third poll. That is the easy one. Going to end the poll. Ma'am, the poll is not visible. Who is there? Who's there? Who is saying poll is not visible? No issue. अगर कोई पोल नहीं दिख रहा, no problem. अगर रिज्वाइन करके देख लो, अगर होता है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क इश्यू के कारण नहीं हो रहा होगा. That may be the issue. Okay?
Okay, students, I am going to end the poll. What will the answer in this case? D. The answer will be D. All of the above, ma'am. All of the above. Okay, all of the above. चलो लास्ट पोल है वो भी हम कर लें ताकि हम बाद में आराम से कर लेंगे टॉपिक. Now last poll. Attempt the last poll also. What is the answer? I'm going to end the poll, students. Hurry up. Ma'am, the code Yes. is actually, ये मैम कोड कंप्लीट नहीं है. Code complete नहीं है. What Yes, is- ma'am. एक मिनट, let me check the question pointers. मेमोरी नहीं ऑक्यूपाई की उसने, स्पेस कम ली होगी. लेट मी चेक इट. Okay, I am going to share the screen. You can see the code from there and answer me. Program is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Hurry up. Ma'am, A. Answer is A. Yes. Answer is A. Take आप स्नैपशॉट ले लो. ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना बाद में. Now I am moving to the next topic. The answer in this case is A. Try to solve by yourself. Try to solve it by yourself. Here the symbol, this is the, ये symbol क्या represent कर रहा है? Null. Null, correct. That is a null character. Okay. No. Okay. Now let's move to the next topic. Now let's move to our topic. That is, here you can see the small program of the dynamic memory allocation. How we can allocate the memory. How we can allocate the memory. Float is the pointer variable. Okay. This will be stored this is represent a reference variable into the stack. This will refer to the stack. ये stack में refer करेगा अभी के लिए. Then afterwards, when I have written the new means now I allocate the memory of the 4 bytes into the heap. Now the memory is allocated into the heap of the 4 bytes. Now into this memory, it will store the answer 10.5. Afterwards, as you know, pointer PTR means the indirection or dereference. The answer on the output screen will be 10.5. And the way to delete the pointer, write the keyword delete and the name of the pointer. Write the keyword delete and write the name of the pointer. In this way, you can delete the pointer. Okay. This is the basic syntax. How we can, here I have allocate the memory dynamically. Here I have deallocate the memory which is allocated by new operator. I hope
Is this is clear to all of you? How we can use the new keyword and the delete Yes, ma'am. keyword. Okay. Now, in the case of array, you can see in the slide, while creating an array, just write size by like this, or you can say like this. Okay, just write the size, or in many cases there is also the like this. Just write like this. Okay, we write like this. Clear? Means we are allocating 4 into 100 means 400 memory allocation into the heap. I am allocating the during the compile time, during the run time. ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 400 बाइट की मेमोरी कहां पे ऑक्यूपाई हुई है, कहां प्रोवाइड की गई है, हीप के अंदर. कब? ड्यूरिंग द रन टाइम, ड्यूरिंग द रन टाइम. ओके. एंड हाउ वी कैन डीएलोकेट? डीएलोकेट कैसे करेंगे? हाउ वी कैन डीएलोकेट? Delete. Delete by writing the delete keyword. How we can write the delete keyword in the case of array? Yes, like this. Ma'am. Yes. You can see in your slide also. Here, delete array size and the pointer. Delete, this is like this. Delete, I repeat, delete pointer, array and the pointer. Means I want to delete the whole array which is referred by the PTR. Okay. Clear to everyone? How we can Yes, ma'am. allocate the memory of variable, Yes, ma'am. and how we can allocate or deallocate the memory in the case of array. Yes, ma'am. Any student have any query? Okay, now एक स्टूडेंट ने मेरे से ना एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्या हम एरे का साइज जो है वो n लिख सकते हैं? किसी ने पूछा था मेरे से, अगर किसी को याद हो तो. मैं यस. हाँ, सूरज. किसने पूछा था? सूरज. Suraj. Yes, Suraj. Yes. In the with the help of the dynamic memory allocation, I can able to suppose यहाँ पे मैं लिख देती हूँ by allocating the memory, I will write the n. I will write n, and within the program I can able to write enter n and can able to provide the memory. Means during the run time I can able to provide the memory with जितनी आपको required है by using the concept of the dynamic memory allocation. समझ लग गया? In the case of static, we can't able to allocate the memory like this. But in the case of the dynamic allocation, we can able to write like this also. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now let's move to the main some problems that occurs in the this pointer concept is very vast. मैं आपको इसके ट्यूट शीट भी सेंड करूंगी, वो प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट टाइम हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसे आफ्टर द एग्जाम्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द वेरियस. नाउ फर्स्ट void pointer before void pointer. Now next topic is the void pointer. Anyone have any some knowledge about the void pointer? Any student have some knowledge about void pointer? What is void pointer? Yes. And a pointer that does not point anywhere. जो कहीं भी point नहीं कर रहा है. जो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा. नहीं. No. Void pointer. ऐसा पॉइंटर, Yes, ऐसा yes. पॉइंटर जो किसी भी डेटा टाइप से यूज नहीं किया जा रहा है. Listen now. Ma'am, Yes. थोड़ा सा ठीक हो, मैं आपको बताती मैम. हूँ. Yes. मैम जो void pointer होती है मैम, वो सिर्फ पॉइंटेड करती है ऑब्जेक्ट ऑफ एनी डेटा टाइप. Yes. मतलब कोई भी डेटा. कोई भी डाटा टाइप है उसको पॉइंट करने के लिए पॉइंट यूज करते हैं हम. अभिजीत, वेरी गुड. void pointer, suppose let's take an example. If I want to store the integer data, listen,
I have to make the pointer of the integer type, जो मैंने आपको पहले बताया. Yes. If I want to store the data of float type, I have to make the pointer of the float type. Yes, ma'am. Yes. I have to make the. Now you can see, if I want to store the integer data, I have to make the pointer of the integer type. If I want to store the float data, I have to make the pointer of the float type. If I want to make the store the data of character type, I have to make the pointer of the character type. Double. Where is, yes. Now there we can able with the concept of void pointer, we will make one pointer. We will make one pointer that can be used for different types. That can be used for different types. Suppose if I write the integer data, I have to write integer. If I write float, I have to write float. Now how can I create the void pointer? Syntax. Syntax is first write the void keyword and name of the pointer. This is a syntax. This is the first step. बात समझ लगी जो मैंने बोली अभी तक? Yes, or ma'am. no? कि जब भी मैंने बनाना है तो मुझे ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट सिंटेक्स, फर्स्ट स्टेप void keyword and then the pointer. कहां पे बनाओगे? At the top. Now I am going to remove this line. I am going to remove this line. I am writing here float b is equal to 9. Now here I am creating the void pointer ptr. That is the first step. Now this pointer can be used for the integer type also. This pointer can be used for the float type also. That is one thing. This pointer can be used for any type. How can I use? Just write cout pointer bracket pointer int. कैसे लिखना है आपने? pointer int. सिंटेक्स में गलती ये ऐसे like this. You will, first step is void pointer, second step is like this. Dereferencing operator int pointer ptr. This is syntax. Means क्या मतलब है इसका? जो मैंने अगर अब ये पॉइंटर है इस लाइन में किस में वर्क करेगा? किसमें वर्क करेगा? इंटीजर डाटा स्टोर करने के लिए. और ये पॉइंटर रेफर कर रहा है उसकी वैल्यू को रेफर करने के लिए. This is referring to the value and this will show our the data is of the integer type. Similarly, if I want to store the pointer data, I will write this float pointer, that is p. The ptr लिख रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो ptr लिख लेंगे. ptr. Okay, this will work like this. Clear to everyone or not? Any doubt? No, ma'am. इससे पहले हमारी क्या लाइंस आएंगी? If I will write here pointer, void pointer लिखा ना, तो pointer is equal to address of a. Pointer is equal to address of a. यहाँ पे लाइन आ जाएगी pointer is equal to address of b. Nothing else. Now this pointer can store the address of floating value. Now this can store the address of the integer value with the same pointer name. With the same pointer name. Clear to everyone or not? Yes, ma'am. Any question or Clear, any ma'am. doubt regarding this? Clear? Shall I remove this? Yes, ma'am. जल्दी से बोलो. Now, next topic is the problems regarding pointers. Problems regarding pointers. One is null pointer. Null pointer error. Null pointer error. Null pointer error. Null pointer error क्या होती है? Yes, anyone? अगर मैंने एक पॉइंटर है, ये ले लिया,
इसको कोई एड्रेस स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये क्या कंटेन करेगा? गार्बेज वैल्यू। तो इससे बेटर होता है, प्रेफर करते हैं कि ऑलवेज टेक इट एज ए नल. Null can be taken like this or null can be write like this or null can be write like this. समझ लगी मेरी बात जो मैं बोल रही हूं? Now afterwards, if I write the pointer ptr 10, if I write the pointer ptr 10, now tell me what will be the answer in this case? Error, ma'am. एरर आएगा? Yes, ma'am. क्यों एरर आएगा? मैम हम पॉइंटर में डायरेक्ट वैल्यू उसको पॉइंट मैंने कर दिया पहले ना, दे वो सकते उसको मैंने नल कर दिया है डिलीट मैम नहीं किया. मैंने. हम कह रहे हैं कि ये 10 को पॉइंट कर रहा है पर इसमें एड्रेस तो नल है, यस मैम. तो ये कौन सी एरर होती है? नल पॉइंटर एरर. नल पॉइंटर. This is called the null pointer error. Okay. Now next is called the dangling. That is dangling से पहले wild pointer. Second is the wild pointer. What is wild pointer? Now what is wild pointer? Anyone? What is wild pointer? इनिशियलाइज पॉइंटर मैम. जोर से बोलो, कौन बोल रहा है? इनिशियलाइज किया नहीं है मैम. इनिशियलाइज नहीं किया मतलब कोई मेमोरी नहीं प्रोवाइड की हमने. लाइक दिस, इफ आई राइटिंग दिस पॉइंटर एंड आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी लोकेशन के इसमें क्या स्टोर करना है, आई एम राइटिंग दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड अ वाइल्ड पॉइंटर. दिस इज कॉल्ड अ वाइल्ड पॉइंटर. और इफ आई राइट लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड अ वाइल्ड पॉइंटर्स. मीन्स कि जब भी मैं पॉइंटर्स कंसेप्ट यूज कर रही हूं तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा लिखूंगी तो अकेला लिख दिया, कोई एड्रेस नहीं स्पेसिफाई किया, then it become the wild pointer. That is a useless, which doesn't contain any address. Okay. Now next comes the dangling pointer. Dangling pointer. Yes, anyone? Yes, anyone? Tell me. डैंगलिंग मतलब मैम डीलोकेटेड. अगर हम जैसे कोई पॉइंटर लेते हैं मैम, ठीक है, और उसको फिर मैंने फंक्शन के रूप में पॉइंटर को डिनोट किया और फिर मैंने कॉल ऑफ किया फंक्शन को, अगर वहां पे हमने चेंज कर दिया है तो वो फिर हमारे मेन जो आपकी बॉडी है उसमें भी वो चेंज हो जाएगी, मतलब खत्म, वहां से डिलीट हो जाएगी अगर मैंने वहां बॉडी पार्ट से डिलीट किया मैम. तो एक चीज तो आप सबको पता है ना कि फंक्शन ऑल्सो ऑक्यूपाई द मेमोरी. Function also occupy the memory. I think this is clear to all of you. Okay. Yes, ma'am. Now ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया. This is a main program. This is a main program. Means this is the main program had contained the memory into our code section. Okay. हमारे code section में memory occupy कर दिया. And there is the one function memory occupied within this is the function memory. Yes or no? इसकी यहाँ पे memory occupy होगी ना? This is a memory occupied within the main part. Now this function will transfer the control to this part. Will transfer the control to this part. Okay, when I ये transfer control किया, तो here it is a int x. Int x means it will store the x value into this block. It will store the x value into this blocks. Now afterwards, I have taken the one local block with एक curly bracket ली है और उसमें अंदर int a लिख दिया. इस int a का मतलब क्या है कि ये a जो है इसका स्कोप कितना है? बस इतना ही. इसका स्कोप कितना है? बस यहां तक ही है, जहां ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हुआ. यस और नो? क्लियर? समय लगा कि नहीं? क्लियर और नॉट? अभी तक जो बोला मैंने. Yes, ma'am. यस. ओके. अब इसका स्कोप इतना ही है. अब मैं क्या कर रही हूं, यहाँ पे एक मैं पॉइंटर वेरिएबल बना रही हूं.
आई एम मेकिंग द वन पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर पीटीआर. वो पॉइंटर पीटीआर कहाँ पे है? इसके अंदर. इसके अंदर क्या स्टोर होगा? इट विल ओनली कंटेन द एड्रेसेस. इट विल ओनली कंटेन द एड्रेसेस. नाउ here I am writing pointer ptr is equal to address of A. Pointer ptr is equal to address of A. Now tell me what will be the answer? Pointer ptr equal to the address of A. चलो अब ऐसे करते हैं, पहले इसको इसके अंदर लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं. पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए. अब बताओ मुझे क्या आंसर होगा? मैम इट विल पॉइंट टू. जोर से बोलना, आवाज नहीं आ रही. मैम टेल मी. हाँ, the pointer will point to A. means this pointer, suppose this pointer, there is the one variable A which is at the location 2000. Okay, now this is pointer ptr, there is another variable ptr. Now this pointer contains the address of A, means this 2000 is stored here. Yes, this 2000 stored into here. Now there is a local scope. This is a local scope. I will remove this part. Okay, this is a local scope. मतलब जब ये int a लिखा है, इसका स्कोप कहां से? ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट तक, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक. आफ्टर दिस, ये ब्रैकेट के बाद ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. ये क्या खत्म हो जाएगा? ये क्या हुआ? खत्म हो गया. ओके, अब इस पीटीआर में अभी तक भी क्या स्टोर है? 2000. डैंगलिंग मतलब हवा में वो वैल्यू लेके घूम रहा है जो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. 2000, वेयर इज 2000 नाउ? टेल मी. यू कैन, क्या आपको दिखाई दे रही है 2000? नहीं है, क्योंकि वो तो डिलीट हो गया, क्योंकि ब्लॉक डिलीट हो गया. दिस इज कॉल्ड अ डैंगलिंग पॉइंटर की हवा में घूम रही है चीज. दैट इज कॉल्ड अ डैंगलिंग. क्लियर और नॉट? क्लियर मैम. Yes, Any? ma'am. Yes, yes. Any question? Any question? No? Shall I move to next topic? Yes, ma'am. Yes, yes, very good. Next, last problem, that is a memory leak. Last problem is memory leak. क्या होगी memory leak बच्चा? What is memory leak? मैम पॉइंटर को कॉल ऑफ कर लेंगे पर इसका यूज नहीं कर रहे हैं बाय द वे, और हम पूरे प्रोग्राम में लेके चल रहे हैं साथ में मैम. मेमोरी हमने, आई विल टेक अ स्मॉल. हाँ हाँ, बोलो बोलो. मैम मैंने एक कोई पॉइंटर मतलब इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है मैम, मैंने टेक किया. अब उसकी हमने यूज नहीं किया मैम, उसको उस पॉइंटर को बार बार हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन मेन प्रोग्राम में पूरा उसको लेके साथ में चल रहे हैं मैम. तो उस तरह क्या कर रही है, एक अलग मेमोरी रिजर्व कर रही है मैम. इसको हम कह सकते हैं मेमोरी. Yes, ये जो problems है ना, these are not errors. These are not the errors in our program, but they can provide us problem. ये हमारे लिए प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है मेमोरी से डील करने के टाइम. ठीक है, इनकी केयर करनी है हमें. Suppose you allocate the memory. There is one pointer PTR, and PTR is equal to new int. आपने एक पॉइंटर है PTR को, उसको मेमोरी एलोकेट कर दी, आपने ऑपरेशन में परफॉर्म कर दिया, बट यू फॉरगेट इट टू डिलीट. दिस इज कॉल्ड अ मेमोरी लीक. ओके, दिस इज कॉल्ड अ मेमोरी लीक. क्लियर? आई फॉरगेट, आई हैव use a keyword new and allocate the memory, but I forget to delete that memory. That is called a memory leak. Clear to everyone? यस मैम. Ma'am. Yes. मैम, Yes. इसमें Yes. एरर नहीं आएगी कोई भी? एरर मेमोरी नहीं लीक आएगी, में किसी भी केस में एरर नहीं आएगी. जो भी मैंने तो आपको फिर मैम पता कैसे लगेगा कि मेमोरी लीक हो रहा है? देखो बेटा, हमें पता है ना, एज ए प्रोग्रामर आई नो यू कैन गेट द रॉन्ग आउटपुट. आपको आउटपुट गलत आनी शुरू हो जाएगी, आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा. डिजायर रन टाइम एरर्स यू कैन से, सिमेंटिक एरर्स, नॉट ए मीनिंगफुल एरर्स. मीनिंगफुल डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा.
मुझे पॉइंटर के साथ काम कर रही हूँ और मेरा रिजल्ट डिजायर्ड नहीं आ रहा, तो अगर मैंने ऐसे लिखा है, मैं कह रही हूँ पॉइंटर पीटीआर बनाया और उसे सी आउट कर दिया, क्या ये एरर है? नहीं है, बट मुझे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ओके, क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंटर्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। पर बेटा आप इसके अलावा एक कंसेप्ट है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, 5 मिनट लेते हैं और। फंक्शंस, फंक्शंस में भी पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं। ज्यादा डीप, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल्स में बताऊं, प्रोग्राम्स में आपको दूंगी, आप वो ट्राई करना। फंक्शंस पॉइंटर के साथ यूज कैसे करते हैं। इससे पहले मुझे ये बताओ, हाउ वी कैन पास द एरे एज ए आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन। एरे को कैसे पास करते हैं फंक्शन के अंदर? टेल मी। आई एम एरे मेकिंग का दिस नाम और फंक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फंक्शन लिखा, यहाँ पे इंट लिख दिया और साथ में ये एरे का सिंबल लिख दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? ये बना लिया। अब उसके बाद नाउ नेक्स्ट कम्स द थिंग दैट इज फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के अंदर मैं लिख देती हूँ इंट a20 एंड हियर आई विल राइट कॉल द फंक्शन विद a। ओके, जस्ट राइटिंग द a। क्या मैं a लिख सकती हूँ यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay, then afterwards, if I write int func, I will write here the a, this, any size. बेटा ये जो एरे बनाया है मैंने, ये एरे कौन सा होगा, कौन सी लोकेशन होगी ये वाली? एनीवन टेल मी, ये एरे की कौन सी लोकेशन होगी? टेल मी, ये एरे की कौन सी लोकेशन को रेफर करेगा? फर्स्ट लोकेशन। हम्म, मैम ये तो पॉइंटर एक्ट करेगा ना, वही चीज बतानी है। जब भी हम Yes, ma'am. फंक्शन यूज करते हैं ना, फंक्शन यूज करते हैं विद पॉइंटर्स। मैं आपको एक प्रोग्राम शेयर करती हूँ आपके साथ अभी, क्योंकि टाइम कम है। ओके, जब तक वो ओपन होता है, आई वांट टू द सिलेबस ऑफ योर सेशनल इज द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सिलेबस की कॉपी मैंने आपको पहले ही व्हाट्सएप की हुई है, पीडीएफ। यस, पीडीएफ अवेलेबल है आप सबके पास पहले ही? यस और नो? No, ma'am. पीडीएफ मैंने सेंड की है आपके ग्रुप में, दैट इज ऑफ सिलेबस। मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगी पीडीएफ कॉपी, ठीक है? पीडीएफ कॉपी में आपके सारे सिलेबस अवेलेबल हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंगली फर्स्ट 2 टॉपिक्स दैट इज ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 में बेसिक्स, दैट इज ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, वो चीज आ जाएगी। मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, वो सारी चीजें हैं। दैट इज द पार्ट 1 एंड द पार्ट 2 इज एरेज, फंक्शंस, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, बिट वाइड, बिट लेवल फील्ड, ये सारी थिंग्स आएंगी। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, this is your syllabus. Any doubt regarding the syllabus? पॉइंटर नहीं आना है। No, good. Ma'am? Okay. Yes? पॉइंटर नहीं आना है। हाँ, पॉइंटर्स आना है पॉइंटर्स सिलेबस में है। मैं आपके साथ 2 मिनट रुको, सिलेबस शेयर करती हूँ पहले तो। Let me share the syllabus first. Then afterwards we will move to the next topic, next part.